So, Namaste. Thank you so much for joining today. And everybody who's here and also on YouTube Live, I would like to present today's topic, which is day 11, which is all about mental health or mental well being. अभी तक जो हमने cover किया, that was about our physical well being and then about emotional well being. Now we are moving on to the third aspect of our life, which is mental well being. So let's just talk about it. That what do we mean by mental well-being? What is that path which leads to this beautiful mental health? So we know हमने जब भी आज तक mental well-being के बारे में बात किया है, it's all about the brain, right? Like what is our intelligent quotient, what has been our concentration power, what has been our thought power. तो हम कहते हैं कि जब हमारा माइंड बहुत ही वेल डेवलप्ड हो जाता है तो हम कंसंट्रेशन में, इंटेलिजेंस में, हम थॉट पावर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और जब हमारा एक वेल डेवलप्ड इंटेलेक्ट हो जाता है तो हमारी जो एबिलिटी है डिफरेंस देखने की बिटवीन राइट एंड रॉन्ग वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। और फिर हम लाइफ सपोर्टिंग थॉट्स में एंटरटेन कर पाते हैं। ऑल द थॉट्स हमारी लाइफ में जितने भी थॉट्स आते हैं वो क्यों होते हैं? वो हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से होते हैं। और जैसे मेरे साथ अगर कोई इवेंट होता है अभी, और उस इवेंट को ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं उसे हैप्पी बोलूं या अनहैप्पी बोलूं। अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूं, अगर एक छोटा सा बच्चा है और उसने जाके कैंडल जल रहा है और उस हीट में अपने हैंड फिंगर को डाला एंड देन इमीडिएटली दैट किड हैज एक्चुअली एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ पेन। और उस पेन से क्या होता है कि आसपास के जो लोग, नहीं नहीं नहीं, यू शुड नॉट टच इट, ये पेनफुल है, ये इट्स लाइक अ अनहैप्पी मोमेंट, सी तुमको पेन हो रहा है वगैरह वगैरह। सो व्हाट वी हैव डन नाउ, दैट किड हैज डन इज एक्सपीरियंस दैट पर्टिकुलर इवेंट और उसने अपने मेमोरी में एक फीड कर दिया कि दिस kind of thing is unhappy, and then you are crying, you are attaching all sort of low emotions to it. बट ऑन द अदर हैंड जस्ट विजुअलाइज अ सिचुएशन जहां पर सेम सिचुएशन है, बट आपके जो पेरेंट्स है वो किड को ये समझाते हैं इट्स ओके, दैट्स फाइन, एंड इट्स basically you've learned today something, no need to cry, no need to consider it as a painful moment or a unhappy moment. तो जब आप ऐसा करते हो तो वही बच्चा जो है वो उसको एक अलग मीनिंग देगा, विच इज एक्चुअली मे बी इट्स लाइक अनहैप्पी बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, and once the event is over, then you get to return to your normalcy, which is actually a happy moment, right? तो हम जितनी भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको हम नेम देते हैं, that this is a good moment and this is a bad moment, this is a happy moment and this is a unhappy moment. तो वो सब किसका काम है? ये हमारे एक्चुअली माइंड का काम है, राइट? उसको डिफाइन करना, उस इवेंट को, कि ये हैप्पी है या अनहैप्पी है। तो हमारा जब इंटेलेक्ट, हमारा जब माइंड जितना ज्यादा डेवलप करता है, हम लाइफ में हर एक चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। जैसे अगर हमारे साथ कुछ ऐसी चैलेंजिंग चीज होती है उसमें भी हम क्या कहते हैं कि ओके, दिस इज अ पार्ट जहां पे मुझे कोई लेसन लर्न करना था, इसलिए मैंने इस पेनफुल मोमेंट से को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। वी नेवर एवर कंसिडर दैट एज अ नेगेटिव मोमेंट। वी डोंट से दैट दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। वी नो कि हमारी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इट्स जस्ट कम इन आवर लाइफ बिकॉज दिस इज हाउ इट वाज मेंट टू बी। और साथ साथ उस एक्सपीरियंस की जरूरत थी हमारी लाइफ में, क्योंकि हमें अपने एज अ सोल हमें इवॉल्व होना था। तो अ, जैसे हम डिफाइन करते हैं, हमारा माइंड जैसी भी चीजों को डिफाइन करता है, उसी तरीके से हम अपनी लाइफ में गुड और बैड मेमोरीज क्रिएट करते हैं और अपनी लाइफ को हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरीज में डाल देते हैं, राइट? नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हमने एक प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया, सेवरल मंथ्स तक हम काम करते रहे, और उसका जो फीडबैक था, देयर वाज एक्सपेक्टेशंस, राइट, दैट आई विल रिसीव सम ए प्लस 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 वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड एज अ फीडबैक। हाउएवर वो नहीं हुआ, and you've got a lot of improvement areas which your boss has told you that no, this was not good, this was not good, this was not good. So what happens immediately? हम बचपन से सीखते आए हैं, क्या बोलते हैं हम, कि ये तो प्रोजेक्ट फेल हो गया। वी कंसिडर इट एज अ फेलियर एंड वी बिकम अपसेट। तो वो जो एक फेलियर टैग है ना, वो एक्चुअली हमारा इनर मेंटल डायलॉग है। ये ऐसा मेंटल डायलॉग है जो कि अगर हमने स्टॉप नहीं किया तो ये बार 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 अगर ये रिपीट होता रहा तो ये क्या होगा?
हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, हमारे अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। व्हाई? बिकॉज आप बार बार एक ही चीज को सोच सोच कर उसको एनर्जाइज कर रहे हो और उसी को अपनी लाइफ में सच कर रहे हो। तो आपके जो बाकी के एरियाज है जहां पे आप बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, लेट्स से आपका प्रोजेक्ट लेट्स से नहीं चला, but आपकी family life was superb. Okay, you were spending some time, quality time with your family, but now what happens, because you are in that negative inner dialogue, तो आपकी जो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम है उस पे भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा, विच विल बी नेगेटिव। राइट? सो आपका धीरे धीरे जो बाकी एरियाज है वहां पे भी नेगेटिविटी आती है, और फिर हम डिप्रेशन और डिसऑर्डर्स में एंटर कर जाते हैं, फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर हम दवाइयां लेते हैं, और बहुत सारी इस तरीके की चीजें होती हैं। सो रिसर्च के हिसाब से जो हमारा इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, विच इज कॉल्ड एमिगडेला, जब भी हम फियर में रहते हैं, जब भी हम गुस्से में रहते हैं, हम किसी भी लोअर इमोशंस में रहते हैं, तो ये बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं तो यही एमिगडेला जो हमें रिएक्ट करने में मजबूर करता है वो छोटा हो जाता है। इट एक्चुअली श्रिंक्स, इट ऑलवेज कीप्स श्रिंकिंग श्रिंकिंग द मोर एंड मोर यू मेडिटेट। आपकी जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज है, आपका जो अटेंशन है, अटेंशन पावर, आपका कॉन्सेंट्रेशन है, वो हर दिन स्ट्रांग होता जाता है विद डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। हम कहते हैं कि जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया है जो ब्रेन का, इट इज कॉल्ड द सीईओ ऑफ द ब्रेन एक्चुअली। ये एरिया जो है, जो हमारा सारा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हमारी एनालिटिकल ब्रेन को और स्ट्रांग करता है, तो ये जो एरिया है ये थिक हो जाता है मेडिटेटर्स के ब्रेन में, and this results into better focus and direction, and that's the only reason why we keep recommending कि बच्चों को अगर हम शुरू से मेडिटेशन की आदत डाल दें, तो आप सोचिए उनका जो फ्यूचर होगा, हाउ ब्रिलियंट दैट वुड बी, राइट? So even if they'll face some challenge, they'll have quick solutions and very sustainable solutions. They'll always be in that joyful mode. इसलिए हम चाहे जितने भी छोटे बच्चे हैं, अगर 5 साल के बच्चे हैं, आप 5 मिनट करवाइए मेडिटेशन, बट एटलीस्ट उनको खुद के साथ बैठना सिखाइए, क्योंकि इसी तरीके से उन बच्चों का जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होगा, जैसे जैसे वो बड़े होंगे, उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया है वो ज्यादा थिक होता जाएगा, और फिर उनकी जो फोकस है, उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो कंसंट्रेशन पावर है, एवरीथिंग विल इंक्रीज। राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। एंड ऑल्सो जब आपकी मेंटल हेल्थ बीइंग बहुत अच्छी रहती है, मेडिटेशन जो है आपकी बॉडी में एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स लेकर आता है, तो आपकी बॉडी जल्दी हील होती है, आप इमीडिएटली क्विकली डीप स्लीप मोड में जाते हैं, आपकी जो डीप स्लीप केमिकल्स हैं वो रिलीज होती है, और फिर आपकी जो मेंटल वेल बीइंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। राइट? सो देयर वाज अ साइंटिस्ट डॉक्टर बेंसन who concluded in early 1970s। आप सोचिए, हम उस समय थे भी नहीं, राइट? बट 1970s में उन्होंने कंक्लूड किया था कि मेडिटेशन रिलैक्स करता है हमारे ब्रेन को, बॉडी को, और फिर जल्दी हील करने में हेल्प प्राप्त करता है। और उनके जो पेशेंट्स थे, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उनके जो पेशेंट्स थे उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम था, एंड ही वांटेड अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, उन्होंने रिसर्च करा अपने ही पेशेंट्स पर, उन्होंने ये देखा कि माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन are just amazing tools for mental strength. So that's how meditation actually started gaining importance in the scientific area also, और फिर धीरे धीरे क्वांटम साइंस आज की डेट में मेडिटेशन के पावर को, उसके इम्पैक्ट को सपोर्ट करता है। And here, if you see that what is the other impact on the mental well-being is basically mind power को बढ़ाता है। तो हम थोड़ा सा इसमें टाइम लगाते हैं और हम समझते हैं कि कैसे। हमारे ब्रेन में ऑलमोस्ट 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। ओके? और मेडिटेशन जब करते हैं तो ये जो न्यूरल नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हमारी जो लेफ्ट ब्रेन है और जो राइट ब्रेन है वो स्ट्रांग होता है, अलाइनमेंट अच्छी होती है, सिंक्रोनाइज करते हैं एक दूसरे से, और उसकी वजह से न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो हमारा स्ट्रांग होता है, और हमारी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, हमारा विजुअलाइजेशन बढ़ जाता है, हमारी रीडिंग स्किल्स बढ़ जाती हैं। और जब आपकी ये सारी चीजें स्किल्स बढ़ जाएंगी तो आप खुद ही बोलो आप कैसे डेवलप होंगे। आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंस विल बी जस्ट फैंटास्टिक। ओके? एंड इसलिए मॉडर्न साइंस की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जितना हम न्यूरल नेटवर्क कनेक्शंस बढ़ाते हैं, वो उतना ही हमारा मेंटल वेलबींग स्ट्रांग होता है।
एक और रिसर्च हुआ जिसमें ये पाया गया था। तो पहले साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि जैसे जैसे हम एजेड होते जाते हैं, हमारी न्यूरल नेटवर्क जो है, कनेक्शन, वो धीरे धीरे वीक होता है और उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। इसीलिए जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो, आप बुजुर्ग हो जाते हो, तो उस समय आपकी जो मेमोरी पावर है वो कम हो जाती है, आपकी इंटेलिजेंस कम हो जाती है। ये हम पहले मानते थे, बट जब से मेडिटेशन आया तो हमने ये देखा कि इट डजेंट मैटर एक्चुअली कि आप किस एज के हो। अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपका न्यूरल नेटवर्क, जो आपको लगता है कि स्टॉप हो गया था ग्रोथ जिसका, वो वापस से ग्रो करना शुरू कर जाता है। तो it doesn't matter whether you are 77, 80, 90. If you are meditating, your neural network is amazingly strong. और ये जो न्यूरल कनेक्शंस है, ये जैसे जैसे स्ट्रांग होता है, इसका मतलब क्या है, उनकी लर्निंग बढ़ जाती है, उनके माइंड पावर के डेवलपमेंट्स बढ़ जाते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है। तो एक देर आर टू कॉन्सेप्ट्स, न्यूरो रिजिडिटी इन साइंस एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरो रिजिडिटी जो है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसमें लर्निंग स्टॉप हो जाता है, राइट। सो वो ड्रॉप हो जाता है पूरी तरह से, और न्यूरोप्लास्टिसिटी आता है, विच मीन्स मेडिटेशन करते करते मोर एंड मोर न्यूरल नेटवर्क्स आर continuing to grow in our lifetime. So that's the beauty of this meditation. And when we meditate, body produces lots of hormones. जैसे हमने बात किया कि हम जब स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट करती है, विच वाज एक्चुअली कॉर्टिसोल। हमने बात करा, राइट, जब हम हमारी स्किन हेल्थ पे बात कर रहे थे कि कॉर्टिसोल हमारे स्किन के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देर आर सम हैप्पी हार्मोन्स, एंड दीज आर generated by different emotions, different actions. Just give me a sec. Sorry, my mouse is not working. Okay. So आप जो स्लाइड पे देख रहे हो, this is dopamine. The first feel good hormone is dopamine. What is dopamine? जैसे मैंने अभी कुछ काम करा एंड मुझे recognition मिला उसके लिए, और या फिर मैंने किसी को कुछ गिफ्ट करा एंड उस इंसान ने मुझे थैंक यू बोला एंड आई फेल्ट गुड. So when you're feeling that good, right, because of some reward or recognition, you are secreting dopamine in your brain. So it's, when you meditate, dopamine also gets secreted directly. And आपको उस recognition और reward की जरूरत नहीं होती, आपके अंदर बहुत सारा dopamine create होता है. So for example, if somebody is a perfectionist and making a list, 10 चीजें हैं जो मुझे पूरी दिन में करनी है, और रात को सोने के पहले वो टिक 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 करते हैं कि हाँ इसमें से 9 चीजें तो हो गई हैं, then you feel good about it. And what is that, what hormone is getting created? Actually dopamine is getting created over there. The second hormone, the happy hormone, is oxytocin. Oxytocin क्या है? So basically it's a love hormone. When you feel that you're connected with everyone, like in my case, right? So I don't see a difference between me and the other person. I feel that we are all one, we are all connected. It's all about oneness. So there's a lot of love hormones, which is oxytocin, which is actually generating in my brain. एंड अगेन इफ यू मेडिटेट, आपको किसी को हक करने की, किसी को हेल्प करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर इतना सारा ऑक्सीटोसिन जनरेट हो जाएगा. Similarly, when you have, like, let's say you are doing some exercise, you are running, you are breathing, और breath work कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आप जब ये सब करते हैं तो कौन सा हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है, ब्रेन में रिलीज होता है, विच इज सेरोटोनिन. एंड अकॉर्डिंगली, जैसे आप सेरोटोनिन को देख रहे हो, उसी तरीके से द अदर हार्मोन, just allow me a second, I think there's some problem, the mouse is doing like this on its own. Okay, just give me a sec. Sorry. Okay, now it's working. Okay. So the last hormone which you can see is endorphin, which is a pain relief hormone. So जब आपको जब आप डांस करते हैं, आप बहुत हंसते हैं, आपने देखा होगा, राइट, बुजुर्गों को कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो दे लाइक ठहाका मार मार कर हंसना, राइट. So why do they do that? Because then it generates that endorphin in their body. हो सकता है वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो सकता है वो properly dance नहीं कर पा रहे हो because of certain things, but at least they can release endorphin in their body. So that's the beauty of all these feel good hormones, because आपके बॉडी में जब भी डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन रिलीज होता है, तो आप
ऑटोमेटिकली अपने एलिवेटेड वाले इमोशंस वाले जोन में चले जाते हो, जहां आपकी एनर्जी क्या होती है, वो बढ़ी हुई होती है, राइट? सो आप यहाँ पे जो देख रहे हो, आई जस्ट लाइक टू साइट एन एग्जाम्पल, माई friend Shivani, because she is one person who just believes on meditation like anything. And I still remember, it's been some 5-6 months now, that normally she doesn't have any pain in her body, okay, because she keeps doing meditation. But there was a time जब उनको stomach pain शुरू हुआ, stomach ache शुरू हुआ था कुछ समय के लिए. And then, instead of taking a pill, what she did, she started meditating, and she started manifesting that I am releasing a lot of endorphins in my body. Because endorphin क्या है? आप जो पेन किलर खाते हो ना, उसका जो सॉल्ट होता है, that is endorphin. So when she started meditating, saying that, okay, I'm releasing endorphin in my body, after a few minutes, actually the pain disappeared, which was really, really severe at that point of time. And then she called me and she said, something magical has happened today. So this is the magic which she created because she has been a regular meditator. And similarly, if I used to get a lot of headache and all, then I used to observe my breath immediately in that pain. And I used to say that my body is releasing a lot of endorphin. So then you don't need to have those painkillers. And, whatever pain you have, if it's manageable, if you are a regular meditator, definitely it's manageable, then you can actually start manifesting like this. तो और हम आकांक्षा यहाँ पर है, आई कैन सी हर, सो डेफिनेटली शी विल टेल यू दैट लाइक इन आवर ग्रुप्स, जो लोग मेरे साथ काउंसलिंग में जुड़े हुए हैं, वो अपने ग्रुप्स में भी ऐसी ही बातें करते हैं. आज तो मैंने बहुत सारा डोपामाइन रिलीज किया, आज मैंने बहुत सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज किया. सो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस, योर माइंड इज लिसनिंग टू यू, राइट? And whatever positive words you say, you are actually getting yourself into that elevated emotions. तो हमारा जो वोकैबुलरी है वो भी मेडिटेशन के साथ चेंज हो जाता है, और हम ब्यूटिफुली अपनी लाइफ को लीड करते हैं. And then, because we are talking about mental health, definitely we have to understand what is the importance of books. So महर्षि पतंजलि जो है, उन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुली जो वर्ड है स्वाध्याय, स्वाध्याय के बारे में काफी सारी चीजें बताई हैं, और उन्होंने बताया है कि योगा में स्वाध्याय का क्या इंपॉर्टेंस है. And it is all about studying of self and others in relation to us, right? So this is basically when you meditate, you are emptying your mind. हम कहते हैं ना कि आप जब meditate कर रहे हो, आप एक no thought state of mind में हो. No thought state मतलब क्या, कि आपके माइंड में कोई थॉट नहीं चल रहा उस समय. सो ब्यूटिफुली जो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके हिपोकैम्पस ब्रेन का जो लाइब्रेरी है, जहां पे सारे एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो हिपोकैम्पस में जितने भी पुराने नेगेटिव और लो इमोशंस वाली मेमोरीज है ना, वो सारे हट जाते हैं. जब वो एम्प्टी हो गई आपकी रिकॉर्ड लाइब्रेरी, तो अब क्या हुआ कि मेडिटेशन आपको जो आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं आज की डेट में, वो सारे वहां पे रिप्लेस करता जाता है. एंड मेडिटेशन तो करता है, बट साथ साथ यू आर डूइंग, यू आर गेटिंग इनटू दैट मोड, बट साथ साथ आपको कुछ अच्छी चीजें भी तो लेनी होगी ना. जो पुराने रिकॉर्ड से उसको न्यू रिकॉर्ड से रिप्लेस करना है, तो वो कैसे होगा? इट्स एक्चुअली थ्रू स्वाध्याय. And this is all about, the more and more you read books, believe me, you are creating a beautiful library in your brain, which is going to help you in living this life beautifully. तो हम जो मेडिटेटर्स हैं, उनका सडनली बुक्स के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है. जो हम पहले बुक्स नहीं पढ़ पाते थे, या हम एक पेज पढ़ते थे और हम भूल जाते थे हमने क्या पढ़ा है, सडनली आप रिटेन करना शुरू करते हो. आपने जो एक पेज भी अगर आपने पढ़ा, तो आप उस चीज को रिटेन कर पा रहे हो, और आप फिर आप बोल रहे हो. मेरे केस में क्या है कि मैं बुक्स डेफिनेटली पढ़ती हूँ, बट हाउएवर डेली बेसिस पे, जब मैं सुबह सुबह हाउस होल्ड चोर्स में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब पर उस पूरे एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल मास्टर का विजडम टॉक लगा देती हूँ, और मैं घर का काम करते करते, my whole attention is on that spiritual master, whatever he or she is telling. Because what I'm doing right now is mindfulness, spirituality, quantum science, इन सब के एस्पेक्ट्स को मैं धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके अपनी माइंड में डालती जा रही हूँ. जो मेरा जो हिपोकैम्पस एरिया है, जो लाइब्रेरी का पार्ट है मेरा ब्रेन का, वहां पर वो स्टोर हो रहा है. सो वन ऑफ द थॉट्स, लेट्स से कि दैट एवरीथिंग इज एनर्जी, क्वांटम साइंस सेज दैट, राइट? तो जब एनर्जी है, सब कुछ बदल रहा है, तो जो इंसान मेरे साथ पहले सही नहीं था, वो भी बदल रहा है.
तो जब मेरे को ये लर्निंग हो जाती है, तो अगर मैं उस इंसान से मान लीजिए 2 साल बाद, 3 साल बाद, या फिर एक हफ्ते बाद मिलती हूँ किसी अनफोर्सीन इवेंट के बाद, या चैलेंजिंग हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद उससे, तभी भी मेरे मन में ये होता है कि ठीक है, दिस इज हाउ इट वाज मेंट टू बी दैट टाइम। मैं ये नहीं सोचती कि अरे ये कैसे मेरे सामने आ गया, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। आई डोंट गेट इन टू डिस्प्यूट। वाई? बिकॉज माई लाइब्रेरी जो है मेरा ब्रेन का, उसमें वो चीज है ही नहीं स्टोर अब, कि वो इंसिडेंट हुआ था, चला गया वो। अब उसका सिर्फ एक लेसन है कि yes, you have to keep moving on in life. You can't just catch hold of that one incident और उसकी वजह से आप अपनी पूरी लाइफ वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे वाले जो विजडम टॉक्स है, जो हम बातें करते हैं, वो सारी कहाँ स्टोर हो रही है? आपके ब्रेन में स्टोर हो रही है। तो आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो, आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हो हर चीज में। जब आप रीड करते हो तो क्या होता है बेसिकली कि आपका, लेट्स से आप बिजी हो, तो आपके अंदर वो थॉट खत्म हो जाता है कि जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं रीड करूंगी। अगर मेरे पास 15 मिनट भी है तो मैं एटलीस्ट एक पेज पढ़ के उसको मार्क करके, बुक मार्क लगा के वहां पे छोड़ दूंगी। दोबारा मेरे पास जब 10 मिनट आएगा तब फिर मैं वापस उसी जगह से शुरू करके आई अगेन रीड। and you start synthesizing whatever knowledge you're acquiring through these books, और आप उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो अगर आप कभी एक बुक को पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि नहीं बस दैट्स ऑल, तो मूव टू अनदर बुक एंड देन कम बैक टू दिस बुक आफ्टर अ ब्रेक, आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर सम वीक्स। एंड इवन ऑडियो बुक्स आर ऑसम। जैसे मैंने कहा, मैं तो चलिए यूट्यूब के लिंक सुनती रहती हूँ, बट देर आर सो मेनी ऑडियो बुक्स, लाइक व्हाट अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड दिस इज। जो हमारे समय में जब हम स्कूल में थे तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जो आज के लोगों के पास है। आप खुद सोचिए, आपके पास ऑडियो बुक्स है, आपको जो बुक सुनना है आप बस लगाइए और फिर आप अपना काम करते रहिए और सुनते जाइए। तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हो? यू आर एक्चुअली गेनिंग दैट विजडम every now and then. So many facilities are there. And again, coming back to kids, believe me, you must get them into a habit of reading story books, reading whatever books they like. क्योंकि उससे क्या होता है, जब वो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स की विजडम टॉक सुनते हैं, साइंटिस्ट की, लाइक एक डॉक्टर श्वेता अदातिया हैं जो पीएमसी हिंदी चैनल पे आती हैं, एंड शी इज अ क्वांटम साइंटिस्ट डॉक्टर, एंड शी टॉक्स अबाउट ब्रेन, कि आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो आपके ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो आप जब ये चीजें अपने बच्चों को सुनाते हो तो आप सोचिए आपके बच्चे कितनी पॉजिटिविटी गेन कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फाइंडिंग अ लॉजिक ऑल्सो, राइट? इट्स नॉट दैट कि बस पढ़ना है, हमें बताया गया था कि पढ़ना है, बट आज की डेट में हम अपने बच्चों को बता सकते हैं तो पढ़ने से आपके ब्रेन में ये चेंजेस आ रहे हैं, right? So with a logic you can ask them to start reading books, ask them to listen to the audio books I'm saying, and let them read whatever they want to. It's not that कि ये बड़ों की बुक है और ये किड्स की बुक है। The moment you have taken birth and the moment you start understanding the world, it's the time where you should get into reading. तो कहीं ना कहीं this is a very very important mental health aspects, and there are couple of books with us जो हमें definitely पढ़ना चाहिए. So I'll share the title of those books in the group today after the class, so that if you get some chance you can read those books. If somebody, I've got a lot of books with me. If somebody is staying nearby or want some book from my side, you can borrow it from me, read it, and then return it back. Because this is what we do normally. I've got almost like 250 plus, 300 plus books with me, and a lot many books on spiritual aspects, quantum science aspects, and other things. So you're most welcome to borrow it from me, read it, and then kind of, we can always discuss about books. If you want, we can do such sessions also, because this is again, what are you doing? You are getting more and more knowledge and wisdom in your life, which will help you to grow. So Buddha also says that, because of ignorance we suffer. Simple. Ignorance kaise hatega? Through books, right? Because then you are gaining that knowledge and wisdom within you. So यहाँ पे आप देख रहे हो लिंडा गुडमैन, she also says that books are the swift shortcut to enlightenment, because you learn from everyone and everything. एक छोटी सी छोटी चीज भी आपको इतना सिखा कर जाएगी जब आप बुक्स पढ़ने शुरू करोगे, because you're open to receive things in your life, right? When you start reading books, when you start listening to spiritual masters, so you are in that gratitude mode and you are actually receiving so many things. एंड प्लस अगर आप ये बोलते हो कि हाँ मुझे किस टाइप के बुक्स पढ़ने चाहिए, तो मे बी बिकॉज यू आर मेडिटेटिंग राइट नाउ, यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ समथिंग books, wherein they talk about the energy concept, the quantum science aspect, or everything, has infinite potential. मतलब बहुत ज्यादा abundance है हमारी लाइफ में,
और हम जो सोचते हैं वो रियलिटी होती है. द फर्स्ट बुक which I read couple of years back when I was coming from Bangalore to Delhi, in a flight. The flight got delayed. I went to a their a book shop, and the first book which attracted me a lot was The Secret by Rhonda Byrne. और उस बुक ने ऐसी मेरी लाइफ बदली कि इसके बाद दिस इज माय पाथ एक्चुअली, बट दैट इज द फर्स्ट टाइम. And after that, what happened that whenever there was some birthday of my colleague or my teammate, I used to get that book and gift that book to person. And this is how you can see that, when you start gaining some wisdom, you actually want other people to grow also without any selfish motive. So that's the beauty of meditation. And let's get into meditation today. Very okay, one second. Yeah, so let's get into this. I was just looking if there are new people. I don't see any new people on Zoom, but yeah, thank you so much for joining, everybody. So we'll again continue with heart elevation process. Beautiful elevated emotions to be generated. ये जो हमने happy hormones की बात करी, वो सारे happy hormones आपके अंदर generate होते हैं जब आप heart elevation process करते हैं, right? And then once you visualize a very happy moment, you think of any emotion which is there, like love, gratitude, joy, compassion, kindness, adventure, appreciation, bliss. And then you feel that as if you are आपके अंदर से वो सारी जो ऊर्जा है पॉजिटिव वाली, वो सारी दूसरों को जा रही है. एवरीबडी एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, बिकॉज वी आर all connected. There are 3 locks in this entire meditation series. One is you have to keep your eyes closed. You have to keep your legs in a crossed position. जब आप हार्ट एलिवेशन प्रोसेस करोगे, तब आपके जो हाथ है वो आपके हार्ट पे रहेंगे. आप हार्ट बीट को फील करते रहोगे. यू आर गोइंग टू टेक डीप लॉन्ग रिलैक्सिंग ब्रेथ्स. एंड जैसे आप चेंज हो जाओगे, जब आप ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन करोगे, तब आपके जो हाथ है वो आपके हार्ट से उठकर आपके दोनों हाथों के फिंगर्स को आप क्लैस्प करोगे. कीप इट ऑन योर लैप. डोंट ओपन योर आईज. इफ यू वेयर ग्लासेस, प्लीज कीप देम असाइड and make sure that you don't open your eyes, because see, ultimately हमें समझना है कि जो हम internal energy generate कर रहे हैं, innate energy जो हमने बात करी थी, right? वो एनर्जी जनरेट हो रहा है. अगर आपने आइज खोल दी तो आपकी एनर्जी बाहर चली गई. तो हमें अभी इतनी मेहनत से हम अगर उस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, तो लेट इट स्टे विद इन अस ना, विद इन आवर बॉडी, विद इन आवर एग्जिस्टेंस, ताकि हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हील हो सके. ओके, so that is the only reason. And when you are doing anapanasati meditation, just make sure that this is, you are observing your normal natural breath. No long breath, no short breath, only normal natural breath, right? So let's get into meditation and let's continue this beautiful, beautiful journey, which is actually fantastic. This gives me so much of happiness when I talk about it. That's why, yeah, just give me a second. Dear friends, dear masters, keep your hands on your chest area with your eyes closed, specs removed, with your attention on your sacred heart. Can you feel your beautiful heart? Feel the seed of all emotion, which is nurturing all life with its energies of love, joy, gratitude.
Come on, friends. Connect with your heart center. Feel the beat, the rhythm of your heart. Your primary connection into this quantum field for your experiences of life. Recollect an experience from your past, from your present, where you felt enormous love, gratitude, compassion, and relive that moment and feel that energy. Relive that moment of love, of joy, and feel that energy inside your beautiful heart. We are all deeply interconnected. Deep inside, we are specks of energy, intricately connected with each other. Love is the way. Gratitude, compassion are all the ways to become one again, to become coherent with all things and everybody. And allow yourself to direct that energy onto every corner of this planet Earth for it to be received by the needy. Where your attention goes, there the energy flows. And slowly, let's go into breath mindfulness meditation. With your eyes closed, fingers into fingers, hands rested comfortably in your lap. Observe your normal, natural in-breath and the out-breath, dear friends.
Our goal is to empty the mind. Our goal is to merge into that greater emptiness, that quantum field of connectedness. When we observe our breath, the mind becomes empty. Be with your breath. No forceful inhalation, no forceful exhalation. To your breath.
and allow yourself to become totally empty of all thoughts in your mind. As your mind is becoming empty, we allow our body to function with great coherence. We channelize all our energy into the generous present moment. We become very mindful. We increase our power of thought. Be with your breath, one with that in breath and the out breath. It's natural to have thought. When you recognize you are thinking, go back to observing your breath, your friends, and allow yourself to slowly become empty of all thoughts in your mind. Become aware of the emptiness inside of you, all around you, as you merge into your breath.
allow yourself to experience that emptiness, that blackness, that void. Spreading far and wide. Beyond your room, beyond this planet, stretching into the endless depths of this universe. Stay aware of it, away from your body, away from your life. All emptiness is energy. That infinite field of quantum energy with limitless opportunities and possibilities. The longer you stay aware of this emptiness, where there's no body, where there's no thing, the more you become of it, the more you receive from it.
This is the field of unlimited. The field of wholeness, oneness, everybody and everything are here in this field of energy. The longer we stay aware of this emptiness, that void, that field of light, the more coherent we become with each other. The more coherent we become with our existence. If you find yourself distracted in thought, go back to observing your breath, dear friends, and allow yourself to find that emptiness all around. Friends, at this time, let's express gratitude. It's truly an honor and privilege to be experiencing this life at this time of history. Can you be grateful to all things and everybody? Be grateful to your parents, to your teachers, your mentors. Your gratitude to everybody in your life, your family, your friends, your colleagues, relatives, partners.
Give thanks to this grand nature, the bird, the fish, and the animals, and to everything you use, the technology, the system, the companies, the governments that support our life. Your gratitude to yourself and to this intelligent quantum field. Gratitude is the ultimate state of receivership. I can rest, I am safe, all is well, all is well. Relax your body I can and let your autonomous nervous system repair your body. safe, all is well, all is well. I can rest, I am safe, all is well. Thank you. Thank you. Thank you. It's already 10:30. So in case there is no question or anything to be discussed, we meet tomorrow again at 9:30 p.m. So thank you once again for joining us. Thank you. Thank you, Seta. Thank you.